Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshvabhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So we discussed in our previous session now we are in the 7th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, and we discussed that how Maitreya Rishi in the previous shlokas, he is explaining about basically Mahatma Vidur. He is asking question to Maitreya Rishi in a very humble way, in a very submissive way. And if you remember in the previous session, the last shloka we discussed that Mahatma Vidur is asking a very beautiful question to Maitreya Rishi. And there are a series of questions which he is going to ask now, because that's what is important, to know the truth. And a great soul like Mahatma Vidur is asking these questions not for his knowledge, but for all of us, so that we all can benefit we all can get benefited. So these questions are very common for every living entity. Every human being he has these inquiries called Brahma Jigyasa. So similar inquiries are also being made by Mahatma Vidur here. And in the previous shloka, he asked this question that although the Lord is completely independent of this material existence, but how he still unwinds his pastimes, he manifests his pastimes in the material world. And we discussed about the concept of Nirguna Brahma and Saguna Brahma. So now today we'll start our discussion with text 3, shloka number 3. Kridayamudhyamurbhasya amash chikridishayataha Kridayamudhyamurbhasya amash chikridishanyataha Svatastriptasya chakatham Nivritasya sadanyataha Kridayamudhyamurbhasya Kamaschikridishanyataha Svatastriptasya chakatham Nivritasya sadanyataha. Translation: boys are enthusiastic to play with other boys or with various diversions because they are encouraged by desire. But there is no possibility of such desire for the Lord because he is self-satisfied and detached from everything. Now you see, Mahatma Vidur is asking this question. Arbhasya. Arbhasya means immature people or generally children. Kridisha. Krida means to play. So those who are
boys or those who are immature children, they like playing. They like playing with other boys because of their desire to entertain them. They want entertainment. So they have a desire to play with other boys. But swatastriptasya, swataha, swataha tripta. Tripta means satisfied, and swata means self-satisfied, one who does not need anything external for his satisfaction. So that is Krishna. He does not need anything external for his pleasure. He is self-satisfied. That's why he's also called as Atma Ram. So Krishna is self-satisfied. Cha katham nivritasya sada anyatah. Then how the Lord manifests his pastimes, and he has no desire, and he is self-satisfied. So there is no possibility of desire in the Lord. So basically here in this shloka, if you see, Mahatma Vidur is saying that Krishna, ordinary human beings, immature human beings, he's comparing them with small children. So because small children means they are immature, they don't have knowledge. So because they don't have knowledge, they engage in playful activities. So this material world is just like a playground. And those who are tiny children, they engage in playful activities because this material world gives them allurements. You see, these small children, they are given allurements and they play. But Krishna is not like that. His position is transcendental. He is not an immature human beings like we see in the material world. Immaturity. People are not able to realize that it's just a matter of time before they'll be leaving their body. But still they keep engaging themselves in bodily and material activities. Although they don't realize that one day they have to leave this body. So that's what Mahatma Vidur is asking. So in Krishna, such desires do not exist. He is self-satisfied. So how does he expand himself? How does he manifest his beautiful pastimes on earth? How does Lord Krishna, he plays his beautiful pastimes? That's what is the question asked by Mahatma Vidur in the previous shloka. So those who are immature people, those who have no understanding of this material creation, those who don't realize that one day they'll be leaving the body, they generally get attached to material things. But Krishna is beyond matter. So there is no possibility of Krishna becoming attached to anything because everything is his energy only. So how will he get attached to anything? So Krishna talks about it in the Bhagavad Gita. He says that Maya tatam idam sarvam jagad avyakt murtina mat sthani sarva bhutani nachaham teshvavasthita. That Maya tatam idam sarvam jagad avyakt murtina. So this whole material world is manifest because of my energy. And although I am present in this material world, but I am still detached from this material world. Just like
a lotus flower. The lotus flower is present in sometimes is present in muddy and marshy places. Sometimes lotus flower is present in lakes. All around the lotus flower there is water. But this water never affects the lotus flower. Lotus flower is never touched by water or the marshy land where it is present. You see? Similarly, although Krishna is present in the material world, but he is always detached also from this material creation. So that is a special characteristic of Lord Shri Krishna, because both are his energy, material energy as well as spiritual energy, both are his energy. So without him, this material world will not run. We discussed in the previous chapter also that how by the touch of the Lord, this whole material energy is moving by the touch of Krishna. So everything material is moving by the touch of Krishna, right? So without his touch, nothing will move. But he, although he is involved in the process, but he is also detached from the process. Just like a proprietor of a company, or just like a high court judge, a proprietor of a company, you see, it's his company, it's his firm. So everything is running because of him. Without his knowledge or without his signature, nothing will move in the firm. But he does not need to personally get involved in everything. There are his agents, his instruments who are doing everything. He need not to get personally involved in every aspect of the company or the firm. Similarly, a king also. The whole kingdom is running because of him. He is in charge of the kingdom. He is running the whole kingdom. But he does not need to personally go and collect taxes from the people. There are his people who are doing that. So although he's involved in everything, but still he's detached also from everything. So that's what Lord Krishna says in the Bhagavad Gita also. Now text 4, Shloka number 4. Asrakshit Bhagavan Vishwam Gunamayyatma Mayaya Taya Sansthapayatyetad Bhuyah Pratyapridhasyati. Asrakshit Bhagavan Vishwam Gunamayyatma Mayaya Taya Sansthapayatyetad Bhuyah Pratyapridhasyati. Translation. By his self-sheltered potency of the three modes of material nature, the Lord has caused the creation of this universe. By her, he maintains the creation and conversely dissolves it again and again. Now you see what is Mahatma Vidur is asking here to Maitreya Rishi. Again, one more question he's asking. What is he saying? That so these are series of questions asked by Mahatma Vidur to Maitreya Rishi for all of us. So what is he asking? Asrakshid Bhagavan Vishwam. Gunamaya Atma Mayaya. So Bhagavan, Krishna, Vishwam, this whole material creation, which is Gunamaya, which is composed of Guna, the three modes, Sattva Gun, Rajogun, Tamagun, Atma Mayaya. This is created
This is a product of Atma Maya or Yoga Maya, or the original potency of Lord Shri Krishna. Taya sansthapayatyet etat. And Krishna sansthapayaty. He creates, maintains, and pratyabhidhasyati, and he destroys this whole creation. He is the creator, he is the maintainer, and he is the destroyer of this whole creation. You see? And this process is continuous. Again and again, the Lord creates, and then again and again, the Lord dissolves this material creation. So it is a continuous process of creation, maintenance, and destruction, which is all done by Krishna in his potency as Bhagavan Vishwam. You see, the shloka is mentioned here. Bhagavan Vishwam. Because he is the Bhagavan of this material creation. He is the Lord of the creation. That's why he's also called as Jagannath. Jagannath. So, this material world is created by the Lord for illusioned living entities, conditioned living entities, those who go against the will of the Lord by using the minute independence which is given to them by Krishna. And the three modes continuously bewilder the living entity. It is the three modes, Sattva Gun, Rajogun, and Tamogun. These are the three modes which create in a living entity because of the three modes, the living entity thinks himself to be a part of this material creation. Because of the three modes, the living entity, he considers himself, this body, as himself. Right? So because of the three modes, he considers his body to be himself. Why we think that I am this body, although we are not. We are a spirit, soul, and part and parcel of Krishna. But where from this feeling comes that this body is mine, or I belong, I am this body. We take care of this body. We think this body to be real. Where from this feeling comes, where from this understanding comes. So this illusion of reality is created by the three modes of material nature. So it is the three modes of material nature which create this illusion in the living entity. And because of this illusion, he thinks himself to be a product of this material mode. He thinks himself to be a product of the three modes of material nature, or a product of matter. Although he has nothing to do with this material creation. He is not a product of matter, he is a spirit soul. But because of the three modes, he thinks like that, the living entity. Right? And that is why, because he thinks like that, he becomes attached to this body. And because of attachment to the body, or because of connection to the body, he suffers life after life, birth after birth. So only when he comes out of the bodily concept of life, that suffering will stop, that continuous repetition of birth and death will stop. And that is the process of Krishna consciousness, which is the process mentioned in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam for all of us. So that is what here in this shloka we see. Gunamaya. This material mode is, this material nature is created by the Lord Gunamaya, which is composed of the three modes, Sattvagun, Rajagun, Tamagun. And the Lord keeps creating
maintaining and dissolving this material creation for benefit of the living entities, because this material world is meant for reforming the living entities into, so that they can get reformed and revive their original constitutional position, which is Krishna consciousness. Now text 5, shloka number 5. Deshatah kalato yosav avasthatah swatonyatah aviluptavapodhatma sayujjeta jaya katham. Deshatah kalato yosav avasthatah swatonyatah aviluptavapodhatma sayujjeta jaya katham. Translation: pure soul is pure consciousness and is never out of consciousness, either due to circumstances, time, situations, dreams, or other causes. How then does he become engaged in a science? Now you see. Teshatah kalato yosav avasthatah swatonyatah. That means by the influence of time, place, and circumstances, avasthatah swatonyatah, or by other circumstances, swato anyata, or by others' influence, avilupt, avabodh, atma. Bodh means the consciousness of the living entity. Bodh means knowledge or consciousness. So, avabodh, the consciousness of the living entity, avilupt, it should not be influenced by any other thing. It is pure in nature. Sayujjeta jaya katham. So, Mahatma Vidur is asking this question, that how does the consciousness of a living entity get affected? Deshatah kalato, you see on your screen the shloka. Desh, kal, avastha. That means place, time. Deshatah means place. Kalato means time. Avastha means circumstances. Swato anyatah, or some other factors. Avilupt. Lupt means to vanish, and avilupt means which never changes, which is unchangeable. Bodhatma. So the consciousness of the living entity is unchangeable because of all these things. Place, time, circumstances, or any other factor cannot affect the consciousness of a living entity. So you see the question. What is the question? Yujjeta jaya katham. Then how does a living entity, he gets engaged with ajaya? How does he get affected by ignorance? Although he is fully conscious and his consciousness is never affected by anything external, living entity's consciousness is pure consciousness, purity. But still, how does the living entity get affected by this material creation? How does he get subjected to this Maya potency of Krishna? So this is the question asked by Mahatma Vidur. So as we know, the symptom of the soul is consciousness. Soul means consciousness.
And this consciousness is spread all over the body. How do you know the presence of the soul in the body? How do you know? So you know the presence of the soul in the body because of consciousness. Consciousness is the symptom of the soul by which you know that yes, the soul is present in the body. So, and this consciousness is spread all over the body, just like effect of a medicine. If you take an injection or a tablet in any part of the body, the effect goes to all parts of the body, isn't it? Like, during COVID times, Corona, everyone had to go for vaccine. So this vaccine was injected in our body from one part of the body, from a small hole. But the effect of this medicine or this injection or this vaccine got spread all over the body. Similarly, the soul is present within the heart of the body. The soul is present within the heart. But the symptom of the soul, which is consciousness, it is spread all over the body. So the influence of the soul is consciousness, and it is present all over the body. The consciousness of the soul, just like heat and fire, where you cannot separate heat from fire. Can you separate heat from fire? No. Similarly, you cannot separate consciousness from the soul. Soul means consciousness. They are inseparable. So now soul is pure because soul is part and parcel of Krishna. And therefore consciousness is also pure because this consciousness is basically Krishna consciousness. Our consciousness is to serve Krishna, to love Krishna. That is what is the meaning of consciousness. That is our original consciousness, Krishna consciousness. So by nature we are pure. But still here the question is asked by Mahatma Vidur that if the soul is pure, he should not get influenced by anything material. And ideally, he does not get affected by that. But then still, how he is subjected, how he becomes engaged in this material creation. Nescience, you see, Ajaya means ignorance. So how the soul comes into ignorance and he enters into this material body or this material world. You see, consciousness also means knowledge and remembrance. We change our position, our situation changes, but still we remember everything of the past life, of the past. Just like an old man, if you ask him, he will remember what he did when he was a 5-year-old child. So everyone remembers his past, of course, only in this life. You cannot remember your past life. Some of the people can remember their past life, and it becomes dangerous. Remembering your past life is very risky. So, but most of the people, they remember their past. What they used to do 10 years back, 20 years back, 30 years back. They remember everything. So what does that mean? That consciousness never changes. Body keeps changing. A person grows from childhood to youth to old age, but the soul never changes. Why? Consciousness never changes. Consciousness is the same. That's why you are able to remember your past, your present. You try to project your future because of consciousness. So what does it mean? That consciousness does not change. It is pure in nature. So then how come the living entity, he develops ignorance? How his consciousness gets covered? How the consciousness of the living entity gets covered?
how the consciousness of the living entity becomes impure. Because in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that aparyamitastvanyam prakritim vidhi me param. We living entities, we are para shakti or para prakriti of Krishna. This material creation is apara shakti, inferior potency, and we are para shakti, we are superior potency of Krishna. So we are superior energy of Krishna. So we are energy and Krishna is energetic. Energy, the existence of energy is because of energetic. So energy is always inferior to energetic. So we are always inferior to Krishna. We can never become Krishna, just like Mayavadis say. No, because we are energy. Energy is always inferior. Energetic is always superior. So we are superior potency of Krishna. How do we get affected by inferior potency of Krishna? How do we come under the influence of inferior potency of Krishna? So how we get covered by ignorance? How we are able to forget our original identity? This is the question which is asked by Mahatma Vidur to Maitreya Rishi. This whole chapter is the answer to these questions of Mahatma Vidur to Maitreya Rishi. Maitreya Rishi is going to answer all these questions. These are fundamental questions, very, very important. You see how beautifully Mahatma Vidur is asking these questions. Yat kritah Krishna samprashno yen atma suprasidati. So these are called relevant questions. These are the questions which a disciple has to ask from his guru. And Mahatma Vidur is leading the way. He's leading the way. He's asking these most relevant questions. So we will see now, how Maitreya Rishi will be giving answer to all these queries by Mahatma Vidur to Maitreya Rishi. So we'll stop here. You can like the video, you can comment, subscribe to our channel, share it with as many people as possible, so that more and more people get benefited by this divine wisdom of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वपुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में किस प्रकार महात्मा विदुर इस अध्याय में, अब क्योंकि अब हम 7वें अध्याय में हैं, तीसरे स्कंद के, और इसमें हमने देखा कि महात्मा विदुर जो है वो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैत्रेय ऋषि से कर रहे हैं। जो प्रश्न इस पूरे अध्याय का की नींव है, इस पूरे अध्याय की जो नींव है वो यही प्रश्न है जो मैत्रेय ऋषि से महात्मा विदुर कर रहे हैं। वही हमने देखा कि महात्मा विदुर, जो हमने अंतिम श्लोक देखा था अपने पिछले सत्र में, उसमें उनका जो प्रश्न है वो यही है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत से परे हैं, इस जगत से वो दिव्य हैं, 3 गुणों से वो निर्गुण हैं। हमने सगुण और निर्गुण की चर्चा की थी अपने पिछले सत्र। तो वो इस जगत से परे हैं, फिर भी वो इस जगत में अपनी लीला कैसे कर पाते हैं? तो ये पहला प्रश्न महात्मा विदुर का हमने देखा था। तो अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि से करने वाले हैं, जो इस अध्याय की जो नींव है वो उसी के ऊपर निर्धारित है। तो ये पूरा जो अध्याय है वो उसी के ऊपर है। तो हम देखते हैं और क्या महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। तो सिर्फ तीसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। Translation: Boys are enthusiastic to play with other boys or with various diversions because they are encouraged by desire. But there is no possibility of such desire for the Lord because he is self-satisfied and detached from everything. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि छोटे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की इच्छा परम पुरुषोत्तम भगवान में तो नहीं हो सकती। और वो आत्म तृप्त हैं, आत्माराम हैं, और सभी सभी भौतिक आवरण से परे हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं महात्मा विदुर। इस श्लोक में आप देख सकते हैं क्रीडायाम शब्द का प्रयोग हुआ है।
क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल करना, खेलना। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो साधारण मनुष्य हैं जड़ जगत के, उनकी तुलना छोटे बच्चों से की जा रही, कि जो छोटे बच्चे होते हैं इस दुनिया में, मतलब जो साधारण मनुष्य होते हैं, छोटे बच्चे की तरह होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो खेलकूद करते हैं। जो जो थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं लोग, वो थोड़े ये सब करते हैं। उसी प्रकार जो इस जगत के जो मनुष्य लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो इस शरीर से संबंध बनाते हैं, इस शरीर से आकर्षण होता है उनको, शरीर से बहुत अधिक आसक्ति होती है। वो इन शरीर के और शारीरिक चीजों में फंसते हैं। लेकिन जो, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये तो जो अपक्व लोग हैं, जो मुख्यतः जो इस सृष्टि में लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो उनको ज्ञान नहीं होता तो वो ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप देखिए, क्रीड़ायाम उद्यमो, तो क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलकूद, जो इस जगत का खेलकूद जैसा, तो इस जगत को तुलना किया गया है खेल के मैदान से। और बच्चे मतलब मनुष्यों की तुलना की गई है बच्चों से। तो बच्चे इसमें लगे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। कामश्च क्रीडिशान यत, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी को अपनी संतुष्टि के लिए वो ये करते हैं। फिर कह रहे हैं स्वतः तृप्त च कथम, लेकिन स्वतः तृप्त से, कृष्णा तो स्वतः तृप्त है, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है इस जगत में। इसलिए उन्हें आत्माराम भी कहते हैं, कि उन्हें किसी बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अपने आप को तुष्ट करने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए। वो आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, वो अपने आप में संतुष्ट है। उन्हें किसी भी बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं निवृत्तस्य सदान्यतः, तो कथम निवृत्तस्य, तो उनके लिए वो तो सभी चीजों से विरक्त है, तो उनके उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये महात्मा विदुर कह रहे हैं। सो ये हम जानते भी कि जो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा किया था, आपने पिछले सत्र के अंतिम श्लोक में, कि कृष्णा इस जगत में रहते हुए भी जगत से परे रहते हैं। जिस प्रकार एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का जो मालिक होता है, या कंपनी का जो मालिक होता है, या फिर जैसे एक राजा होता है, तो कंपनी का जो मालिक होता है, कंपनी वही चलाता है, उसके इच्छा के बिना कंपनी में कुछ नहीं हो सकता, उसके साइन से ही सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सब जगह उसी को रहना है, नहीं, उसके लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं, वो सिर्फ चलाता है। तो कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती, लेकिन वो हर जगह कंपनी में रहे ये कोई जरूरी नहीं। इसी को कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। तो मैं सब में हूं, लेकिन मैं सब में नहीं भी हूं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे राजा होता है, अब उसको टैक्स कलेक्ट करना होता है, यानी आयकर विभाग उसके उसके राज्य में होता है, जो लोगों से कर लेने जाता है। तो राजा को स्वयं थोड़ी जाना है कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए, नहीं, उसके लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। होता उसी के निर्देश में है, लेकिन वो स्वयं नहीं होता हर जगह, सब कुछ उसकी उसकी शक्तियां काम करती हैं। उसी प्रकार
कृष्णा इस जगत में रह के भी इस जगत से अलग रहते हैं, चलता सब कुछ उन्हीं की इच्छा से, लेकिन वो स्वयं ऐसा नहीं है कि उनको सब जगह पे उपस्थित रहना नहीं। उनके बहुत सारे दूत हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। तो वो सब में रह के हुए भी उससे अलग रहते हैं। चौथा श्लोक। अस्राक्षीत् भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यभिधास्यति। अस्राक्षीत् भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यभिधास्यति। ट्रांसलेशन, अनुवाद। By his self-sheltered potency of the three modes of material nature, the Lord has caused the creation of this universe. By her he maintains the creation and conversely dissolves it again and again. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर आश्रित जो तीन गुण हैं उससे इस सृष्टि की रचना की है, और उसी से ये इसकी रचना करते हैं, इसको चलाते हैं और इसका विनाश भी करते हैं। अब आप देखिए, असराक्षीद भगवान विश्वम गुणमय्या। भगवान विश्वम का मतलब विश्व के जो भगवान है, यानी जगन्नाथ। इसलिए भगवान को जगन्नाथ कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व के वो भगवान है। तो भगवान विश्वम गुणमय्या, गुणमय्या। तो ये जो गुणमय्या, तो ये जो तीन गुण आत्म माया, ये तीन गुण हैं, ये तीन गुण के प्रभाव से ये जड़ जगत कृष्णा चला रहे हैं। और ये जो जड़ जगत है यहाँ पर कह रहे हैं आत्म माया, यानी कृष्णा की स्वयं की माया, यानी योग माया से ही निकली है ये जो तीन गुण का जो जगत है, यानी जड़ जगत। तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति, यानी क्या कह रहे हैं कि कृष्णा इसकी रचना करते हैं, इसको चलाते हैं और इसको फिर विनाश भी कर देते हैं। और बार बार ऐसा होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार इस सृष्टि की रचना होती है और बार बार इस सृष्टि का विनाश करते हैं कृष्णा। तो अब जो ये तीन गुण हैं, गुणमय्या, आप देखिए श्लोक में जो शब्द है गुणमय्या, तो ये जो गुण है, ये तीन गुण हैं। हम इस शरीर से अलग है, हम जीवात्मा है, हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है कि नहीं? हमारा ये जो जड़ जगत बनाया है कृष्णा ने, ये किसके लिए बनाया है? हम लोगों के लिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत में नहीं रहना चाहते थे, तो हमारे लिए, हमें शुद्ध करने के लिए जगह बनाई गई है। ठीक है, तीन गुणों की जो सृष्टि है इसको बनाई है कृष्णा ने। लेकिन ये जो तीन गुण हैं, ये जो तीन गुण हैं, मनुष्य जो जीवात्मा है उसका इन तीन गुणों, मतलब ये जड़ जगत में, अभी हम इस शरीर में हैं, हम इस शरीर के अंदर उपस्थित हैं,
किस कारण हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, या हम अपने शरीर के साथ जो हमारी पहचान बन गई है वो किस कारण बनी है, किस कारण हम ये शरीर के आनंद को अपना आनंद सोचते हैं, उसी को कहते हैं माया शक्ति। उसी को कहते हैं माया शक्ति। कृष्णा की माया शक्ति, माया शक्ति का यही काम है। ये तीन गुण जो हैं, ये हमारे शरीर में वो भाव जो हमारे अंदर आता है ना कि अरे मेरा ये शरीर है, हमारे शरीर से जो आसक्ति बनती है, हम ये सोचते हैं कि शरीर का आनंद मेरा आनंद है, हम शरीर से जो पहचान बनाते हैं, ये तीन गुणों के कारण होता है। तीन गुण वो प्रभाव बनाते हैं जिसके कारण जीवात्मा ये सोचने लगता है कि ये शरीर ही मेरा है, मैं ही शरीर हूं और इस शरीर का आनंद मेरा आनंद है। ये जीवात्मा तीन गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा के अंदर ये भाव आता है। तो ये तीन गुणों का प्रभाव है। ठीक है। तो इस कारण मनुष्य अपनी वास्तविक जो चेतना है वो भूल जाता है, वास्तविक चेतना से वो अलग हो जाता है। क्योंकि वास्तविक चेतना क्या है जीव की? कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, भगवत चेतना, वो हमारी वास्तविक चेतना है। लेकिन कृष्ण चेतना से अलग होकर मनुष्य जड़ चेतना में, जड़ चेतना उसकी हो जाती है। तो यही यहाँ पर महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं। उनके जो ये सारे एक साथ हम देख रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किए हैं, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णा ने तो ये सृष्टि बनाई, वो इसको बनाते हैं, इसको चलाते हैं और इसका विनाश भी करते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि है और इसे भगवान ने हम सबको शुद्ध करने के लिए बनाया है, ताकि हम यहाँ पर आकर अपनी चेतना को वापस से भगवत चेतना में बदल सकें। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, सत्य है, जो अब हम अगले श्लोक में देखते हैं। महात्मा विदुर क्या प्रश्न कर रहे हैं? पांचवा श्लोक। देशतः कालतो योऽसा अवस्थात स्वतोन्यतः अविलुप्त अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। देशतः कालतो योऽसा अवस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। Translation: The pure soul is pure consciousness and is never out of consciousness, either due to circumstances, time, situations, dreams, or other causes. How then does he become engaged in the science? तो आप देखिए, इसका हम अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि जो शुद्ध जीवात्मा है, उसकी शुद्ध चेतना है, तो प्रश्न ये है, शुद्ध जीवात्मा की शुद्ध चेतना है और वो कभी भी इस शुद्ध चेतना से अलग नहीं होता, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर और किसी भी और कारण से। फिर जीवात्मा इस जड़ जगत के प्रभाव में कैसे आती? अब आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर महात्मा विदुर ने कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये प्रश्न पूरे इस अध्याय का आधार है। क्या प्रश्न है? देशतः कालतो योसाव। देशतः, देश, कालतो, काल यानी समय, अवस्था, तथा और अवस्था यानी देश काल और अवस्था यानी प्लेस टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल अवस्था, स्वतोन्यतः और भी कोई भी जो आ, कोई भी कारण, आप देख क्या कह रहे हैं, अविलुप्त अवबोध आत्मा। लुप्त का मतलब होता है खत्म हो जाना, अविलुप्त मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, जो शाश्वत एक जैसी रहती है। अवबोध आत्मा, तो जो आत्मा की जो चेतना है वो कभी परिवर्तित नहीं होती, कभी बदलती नहीं है, वो एक सी रहती है। तो सयुज्य या ताजया कथम, तो महात्मा विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि जीव आत्मा तो किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से जीव आत्मा प्रभावित नहीं होती, तो फिर जीव आत्मा इस जड़ जगत के प्रभाव में आ कैसे जाती, इस माया शक्ति के प्रभाव में आ कैसे जाती? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है चेतना, है कि नहीं? आत्मा को हम कैसे पहचानते हैं? चेतना से। आत्मा का स्वभाव है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। चेतना को यदि हम देखें तो पहला तो जीवात्मा का स्वभाव ही चेतना है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी जो गर्मी है, आग से क्या गर्मी को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अग्नि और गर्मी, अग्नि और उसका ताप जो है, ये इनसेपरेबल एंटिटीज है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। इनको हम एक से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है चेतना, और आत्मा से चेतना को अलग नहीं कर सकते। आत्मा हमारे हृदय में, शरीर में, हृदय में उपस्थित है, लेकिन आत्मा का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में व्याप्त है कि नहीं? आप देखिए, आत्मा उपस्थित पूरे शरीर में है, मतलब आत्मा हमारे हृदय में है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में होता है चेतना के रूप में। जिस प्रकार हम कोई दवाई लेते हैं या कोई सुई लेते हैं, शरीर में इंजेक्शन लगवाते हैं। आप देखिए, जब कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो सबको वैक्सीन लगा। अब वैक्सीन तो शरीर में किसी भी एक भाग में लगा दिया जाता है कि नहीं? लेकिन उस वैक्सीन का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में होता है। उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो तो हमारे हृदय में उपस्थित है, लेकिन जीवात्मा का प्रभाव यानी जो चेतना है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, और इस चेतना को कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए आप देखो, मनुष्य बूढ़ा भी हो जाता है तो उसका जो भूतकाल यानी उसका जो बचपन की यादें उसकी रहती, उसके पहले की यादें सब उसकी रहती। शरीर पूरी तरह बदल जाता है, पूर्णतः। मनुष्य जब बच्चा होता है, फिर यौवनावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो उसका शरीर तो पूर्णतः बदल जाता है कि नहीं? लेकिन शरीर के बदलने के बाद भी चेतना नहीं बदलती। अब वही तो कह रहे हैं श्लोक में कि अविलुप्त
अवबोध आत्मा, कि चेतना जो है वो शाश्वत रहती है, वो कभी बदलती नहीं। तो मनुष्य की चेतना का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में है, और इस चेतना को बदला नहीं जा सकता। तो हमारी वास्तविक चेतना क्या है? कृष्ण चेतना, भगवत चेतना। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है महात्मा विदुर का, कि ये होने के बाद भी मनुष्य इस जड़ शरीर के प्रभाव में आ कैसे जाता है? भाई जीव आत्मा तो शाश्वत है, और जीव आत्मा मतलब जो चेतना है उसे कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी अवस्था में। वही तो कह रहे हैं हम, देखिए देश काल अवस्था, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, किसी भी जगह के कारण चेतना को नहीं बदला जा सकता। तो प्रश्न ये है यहाँ पर महात्मा विदुर का, कि फिर भी जीवात्मा इस जड़ शरीर में फंस कैसे जाती है, इस जड़ जगत में इस अविद्या के कारण फंस कैसे जाती है? कितना अच्छा प्रश्न है ना। क्योंकि आप देखिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं कि अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो ये जो मनुष्य है, यानी जो जीव आत्मा है, वो कृष्णा की परा प्रकृति, उच्चतम, और जो ये जड़ जगत है ये निम्न प्रकृति है, नीचे की प्रकृति। दोनों ही प्रकृति, लेकिन हम परा है, हम ऊपर हैं। और तो इसलिए चेतना कैसे हमारी दूषित हो जाती है, वो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि हम उच्च प्रकृति हैं और ये जड़ जगत जो है निम्न प्रकृति है, नीचे की प्रकृति। तो भला हम ऊंची प्रकृति होके, यानी उप उच्च कोटि की प्रकृति होके हम निम्न कोटि की प्रकृति से प्रभावित कैसे हो रहे हैं भाई? इस शरीर में, शरीर तो जड़ है ना, कृष्णा शक्तिमान है और हम उनकी शक्ति, हम प्रकृति। तो शक्ति हमेशा शक्तिमान से नीचे होती। शक्तिमान ही शक्ति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। शक्ति थोड़ी शक्तिमान को कंट्रोल कर सकती। तो हम शक्ति के अंश हैं कृष्णा के, तो हम तो हमेशा कृष्णा से नीचे हैं, लेकिन जड़ जगत से तो ऊपर हैं, शरीर से तो हम ऊपर हैं, शरीर को तो हम चला रहे हैं। तो प्रश्न ये है महात्मा विदुर का, कि ये शरीर के अंदर हम उपस्थित होके भी, पहली बात तो कि हम इस जड़ जगत के प्रभाव में आ कैसे जाते हैं? हम तो कृष्णा की परा प्रकृति, तो हम इस अपरा प्रकृति के संबंध में आ कैसे जाते हैं? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। हम सबके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य प्रश्न है। पूरे अध्याय का जो आधार है वो यही प्रश्न जो महात्मा विदुर कर रहे हैं वो ही है। उसका जो उत्तर दे रहे हैं मैत्रेय ऋषि, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वही इस अध्याय का आधारभूत है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही अद्भुत अध्याय है, जिसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैत्रेय ऋषि देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके, ताकि सब तक ये संदेश पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।